Hello, hi viewers. So we are back again with this new type of live sessions that we started last week on specific topics regarding the crypto space, which we think is a problem, and to discuss about the possible solutions. So इस वीक का जो हम लोग टॉपिक रखे थे वो बहुत ही हॉट टॉपिक था एक दो महीने पहले, जो कि है कि आप कैसे P2P में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो सेफली एंड हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम P2P स्कैम्स। एंड जो भी आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं P2P करने में, फाइनेंस में हम लोग नहीं कर पा रहे, कैसे करना चाहिए ताकि आप सेफ रहे, बहुत ज़्यादा फीस ना देना पड़े आपको प्लेटफॉर्म्स पे। तो इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी केप्ट दिस सेशन टुडे अराउंड P2P स्कैम्स। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है इस इन बिटवीन तो आप उसको चैट बॉक्स पे डाल सकते हो एंड विल टेक इट अप। So without wasting time, we'll just start off with the session. And in between, if you have any questions, do comment below and join in. So, Krish and Swavik, let's start with the P2P session. And before we go around, like what are the scams and things around? So, just for the viewers who are watching this as a new or they want to join in into the crypto ecosystem. So, what is P2P and why do we need P2P? I think this is a question that we should answer before and then move to the scams and the right way to do it. Like, why not use exchanges and use P2P as a method where we transfer INR to somebody and they get paid crypto or USDT. So what is the system around how it started off and why it was needed basically, and why is it needed right now? Thank you, Sam, and welcome to this episode of our podcast of educating people how to get away from P2P scam by not getting into a bad situation. So, कहावत है कि like it's always better to be safe than to be sorry. So basically, P2P scam happens, and nobody can stop it. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस हैपेंस फर्स्ट। लाइक सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि लाइक P2P स्कैम क्यों होता है, आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हो जाता है, या आपके अकाउंट का जो बैलेंस है पार्शियली उसको क्यों होल्ड पे लाया जाता है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस। सो इनिशियली क्या होता है कि व्हेन यू गो ऑन अ क्रिप्टो एक्सचेंज आप अपना केवाईसी करते हो, एंड केवाईसी करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो, एंड देन मोस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस अलाउ यू टू ऐड ओनली वन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद आप उस बैंक अकाउंट से या तो पैसा INR डिपॉजिट कर सकते हो एक्सचेंज में या विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स ऑल। तो अभी क्या होता है P2P स्कैम में कि स्कैमर सबसे पहले काम करता है, वो जाके मल्टीपल लोगों को बोलता है कि गेट योर सेल्फ वेरीफाइड इनटू XYZ एक्सचेंज या ABC एक्सचेंज, एंड उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ओपन अ बैंक अकाउंट एंड गिव अस योर लॉगिन ID एंड गिव अस योर बैंक अकाउंट क्रेडेंशियल। तो मैं आपको हर महीने का 5,000 रुपया दूंगा, या मैं आपको हर महीने का 10,000 रुपया दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्कैमर्स लोग जाके सबसे पहले फेक अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं, इट्स नॉट रियली फेक अकाउंट बट अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं लोगों से, एंड टेक कंट्रोल ऑफ दिस अकाउंट। एंड इस अकाउंट का कंट्रोल करने के बाद, नाउ दिस पर्सन हैज एक्चुअली डन द KYC इन एक्सचेंज, दिस पर्सन हैज एक्चुअली हैव अ legitimate bank account, right? And this person actually has a physical presence, मतलब वो जिंदा आदमी है। सो KYC यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि दिस पर्सन इज अ लेजिटिमेट पर्सन और नॉट। तो लेकिन आप ये नहीं वेरीफाई कर सकते कि आपका अकाउंट कौन यूज कर रहा है, राइट? तो ये जब हो गया तो उसके बाद वो क्या किए, वो जाके उनका एजेंट्स होता है, या उनको वो बोल सकते हैं कि लाइक दे आर पीपल हु गोज अराउंड एंड ask people to do this kind of IDs. So generally these type of IDs are done in remote villages जहाँ पे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स है जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है,
and they ask them to open local accounts or accounts in their villages and give them the IDs. And फिर उसके बाद जाके some tout or somebody middleman collects all these IDs and give it to the scammers. अब स्कैमर्स लोग इसको यूज करके बहुत टाइप के पैसा कलेक्ट करने या विड्रॉल करने में यूज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो चाइनीज एप्स है या गैम्बलिंग कंपनीज है, ऑल दीज थिंग्स, वो आईएनआर डिपॉजिट लेते हैं यूपीआई के थ्रू. बोलते हैं ना कि लाइक यूपीआई डिपॉजिट ले रहे हैं, लाइक यू कैन डिपॉजिट बाय यूपीआई, यू कैन गेट बाय यूपीआई. बट एक्चुअली क्या होता है, वो किसी पर्सनल अकाउंट में जाता है. दैट इज नॉट एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द कंपनी. एंड उसके बाद जाके एट द सर्टेन टाइम, जब उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो जाता है, दे डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इन एक्सचेंजेस, कन्वर्ट टू यूएसडीटी एंड विड्रॉ. तो आपको पता होगा कि कुछ साल पहले इंडिया के कुछ बड़े एक्सचेंजेस इस तरीके के चाइनीज स्कैम एप्स में मतलब फंस गए थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम INR टू क्रिप्टो एंड दैट वाज विड्रॉन. एंड दीज एक्सचेंजेस वर नॉट एबल टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये हो गया सबसे सिंपल वे ऑफ डूइंग स्कैम्स. बट देन क्या हुआ, एक्सचेंजेस गॉट स्मार्टर. They do not allow people to withdraw a lot of USDT out now. So now the option is for going to Binance P2P. अब Binance P2P में आप जाके देख सकते हो कि the price of buying USDT ranges from like 2-3% higher to even 5%, 7%, 10% higher. तो अगर आप सोचो, अगर आप नॉर्मल एक ट्रेडर हो, नॉर्मल एक इन्वेस्टर हो, why would you pay 10% higher to buy USDT? There is no logic when you can actually just use let's say some kind of on ramp off ramp service to do it. तो इसमें क्या होता है कि आप जाके आपका जो बेसिकली पैसा है वो जाके आप डिपॉजिट कर देते हो एंड यू गेट द यूएसडीटी. और इन मोस्ट केसेस स्कैमर के पास क्या होता है, दे वांट टू गेट यूएसडीटी, सो दे डिपॉजिट INR एंड द यूएसडीटी सोल्ड बाय समबडी, एनीबडी. तो उनके पास जब INR आया तो बाइनेंस में आपको ये पता नहीं चलता आपको INR कौन भेजा है या किसके अकाउंट से आ रहा है. तो आपके पास INR आ गया एंड यू आर हैप्पी बिकॉज यू गॉट अ 2% बेटर रेट. और फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब क्राइम को डिटेक्ट किया जाता है, फिर फाइनेंशियल एजेंसीज जो भी है या फिर ईडी, फिर उसके बाद विजिलेंस, जो भी बेसिकली एजेंसीज इसको ट्रैक करता है, दे टेल कि जो भी अकाउंट में पैसा मूव हुआ है, लॉक दैट अमाउंट. तो इस तरीके से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या आपका अकाउंट होल्ड पे आ जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि आपने इस पैसे को कहाँ से लिया है और क्यों लिया है. तो जब तक आप जाके बोलते हो कि मैंने बाइनेंस से लिया है, तो वो बोलते हैं कि आपने बाइनेंस में किससे लिया है, डू यू नो दैट पर्सन. वो बोलता है नो, आई डोंट नो दैट पर्सन, बाइनेंस हैज डन हिज केवाईसी वेरिफिकेशन. अब क्योंकि बाइनेंस इज नॉट एन इंडियन कंपनी और इंडिया में उसका कोई सब्सिडियरी नहीं है, सो पुलिस और एनी एजेंसी कैन नॉट गेट दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बाइनेंस सो इजीली. इसलिए वो अकाउंट तब तक होल्ड में रहता है जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, या जब तक आप ये प्रूव नहीं कर पाते हो कि आपने कोई गलत काम के लिए उससे पैसा नहीं लिया. राइट, सो दिस इज बेसिकली द स्कैम और दिस इज बेसिकली हाउ पीपल गेट इनटू ट्रबल. शौविक, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली. इसमें एक्चुअली होता क्या है, बिनांस के ऊपर कुछ मतलब हमारे इंडियंस जो हैं कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, जबकि उसका कोई फिजिकल ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में. तो जो भी यूजर्स यहाँ पे बिनांस को यूज़ कर रहे हैं, उन लोग को ये पता होना चाहिए कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दाव लगा रहे हो या फिर उस प्लेटफॉर्म में एक्टिविटी कर रहे हो. मतलब अगर आप केवाईसी तो वेरीफाइड है, ठीक है, लेकिन आप अगर फंसोगे तो बिनांस आपको जाके बचाने वाला नहीं है. इनफैक्ट मेरे जान पहचान में भी, मेरे सर्कल में भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो लोग बिनांस के थ्रू P2P करते हैं और उन लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है. वो लोग क्या करते हैं, ओपन मार्केट में जाके ये सेल कर देते हैं क्रिप्टो को. फिर अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो ओपन मार्केट में आप अगर सेल कर रहे हो तो वहाँ पे प्राइस तो जो एक्चुअली स्कैमस्टर है ना, वो हमेशा टारगेट, मतलब क्या क्या कहते हैं लोग उसको, हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा प्लानिंग के साथ बैठा हुआ रहता है. ठीक है, जब भी ऐसा कोई अकाउंट वगैरह उसको मिलता है या फिर कोई अच्छा प्राइस में देखता है कि हाँ चलो अच्छा प्राइस में कोई ओपन मार्केट में सेल कर रहा है कुछ भी चीज को, तो फिर वो तुरंत ले लेते हैं और बहुत जल्दी वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं. मतलब ये जो सिचुएशन होता है ना, ये स्कैमस्टर कभी भी मतलब उतना टाइम बैठ के वेट करके फिर नहीं करेगा, उतना वैलिडेशन के थ्रू भी नहीं जाएगा, बहुत सारा लेयर्स या फिर बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू. वो क्या करेगा, फटाफट ट्रांसफर कर देगा. उसके बाद आप भी हैप्पी हो गए, चलो मेरा हाई प्राइस पे सेल हो गया, ये सब हो गया.
लेकिन जैसे आप बोल रहे थे कि 2-3 महीना उतना भी वेट नहीं करना पड़ता है, उससे पहले ही हो जाता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट स्पेशली साइबर क्राइम सेल जो होता है वो रिपोर्ट या फिर स्ट्राइक मारते हैं, तो फिर वो अमाउंट होल्ड पे आ जाता है। और एक बार आप खुद ही मान लो कि आप वहाँ पे जो अकाउंट वेरीफाई कर रहे हो वो आपका हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट या इंडिविजुअल करंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आप टोटल अमाउंट जितना होल्ड है, मतलब टोटल अमाउंट जितना रख रहे हो उस अकाउंट में, अगर वो पूरा अमाउंट ही वहाँ पे होल्ड हो जाता है, तो आप उसको निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि वही है कि आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि ये कहाँ से आया है और ये एक्चुअली लीगल मनी है कि नहीं। तो आप जाओगे बैंक के पास, पुलिस के पास, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास, बहुत जगह चक्कर लगा लोगे, लेकिन वो चीज़ बहुत आसानी से आपको नहीं फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो यूज़र्स को मैं यही सलाह दूँगा या फिर यही रिकमेंडेशन रहेगा हम लोग की तरफ से कि जिससे भी आप लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आगे जाके P2P कर रहे हो, वो सब वेरिफाइड केवाईसी वेरिफाइड यूज़र्स हो, और उसका जो ऑथेंटिसिटी है, ये वेरीफाई करके ही आप लोग करो। ऐसे ही ओपन मार्केट में किसी भी, मतलब ओपन मार्केट में करना मतलब कि आप अपना पूरा सब कुछ खोल के रख दिए, तो कोई भी आके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, राइट? तो इस तरह से यूज़र्स को जो है ना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन ये सब देख के करना होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अ, एक सर्टेन लिमिट के बाद जीएसटी लायबिलिटी आ जाता है और टीडीएस लायबिलिटी भी आ जाता है। तो फिर वो सब चीज़ जो है, वो भी यूज़र्स को ध्यान में रखना है। अगर आप अंधाधुंध कर रहे हो कुछ भी अमाउंट और आपको पता नहीं है ये सब चीज़ के बारे में, ये सब क्लॉज़ के बारे में, तो आगे जाके आप बहुत बुरा फँसने वाले हो। क्योंकि वो जो लायबिलिटी होता है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो उसमें। तो ये करेक्ट। सब चीज़ है, छोटा-छोटा बहुत सारा चीज़ है जो यूज़र्स को ध्यान में रखना है। और टीडीए और ये जो पी2पी का जो इश्यूज आया है, वो मेनली तब से आना स्टार्ट हुआ है जब से इंडिया में 1% टीडीएस और हुँ, 30% टैक्सेशन लॉज लाया गया है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं बाइनेंस में जाके ट्रेड करता हूँ या अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज में कहीं पे ट्रेड करता हूँ, गवर्नमेंट विल नॉट नो दैट आई एम डूइंग दिस, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे आप आईएनआर को किसी को दे रहे हो एंड ही इज गिविंग यू यूएसडीटी, सो द गवर्नमेंट विल कैन क्वेश्चन एंड डेफिनेटली विल क्वेश्चन कि आप इतना आईएनआर उसको क्यों दे रहे हो, व्हाट इज योर नीड, हुँ, क्या उससे आपको आईएनआर मिल रहा है, क्यों आ रहा है? You cannot say कि arbitrarily कि I am just getting paid for XYZ, and you cannot go on saying that. एक दो बार maybe you will not fall under problem, but अगर आप consistently P2P करते हो and if you do a certain amount, government will definitely get to you, if not today, tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow. और इसीलिए टीडीएस का लॉज लगाया गया था कि गवर्नमेंट नोज एग्जैक्टली कि आप कर क्या रहे हो, राइट? और जनरली P2P इज कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस। मैं ताइवान में था, वहाँ पे भी P2P काफी कॉमन था, वहाँ पे कोई टीडीएस लॉज नहीं था, बट लाइक इन पर्सन और वाया एस्क्रो यूजिंग सम प्लेटफॉर्म, दैट वाज वेरी कॉमन। अब इंडिया में क्या है, कोई भी एक्सचेंज P2P प्लेटफॉर्म नहीं लाया है। क्यों नहीं लाया है? ऑफ कोर्स दे डोंट नीड इट बिकॉज दे हैव डायरेक्टली आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल, तो उनको P2P क्यों चाहिए? So anybody who has created a P2P platform is useless for them because they are not going to make money out of it unless they can say कि fine, आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू P2P करते हो, we will take care of the TDS, we will take care of all these things for both the users, and we will charge you say 0.1% trading fees or 0.25% trading fees or 0.5% trading fees, for example. तो इससे क्या होगा कि फाइनली पीपल विल बी एबल टू ट्रेड विद ईच अदर एंड नॉट थ्रू द एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में भी ये प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट ट्रेड ऑन द एक्सचेंज देन हाउ डू दे मेक मनी? तो एक्सचेंज को भी तो पैसा बनाना है, सो दे डेफिनेटली हैव टू पुट सम फीस ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि लाइक इंडियन एक्सचेंजेस मैक्सिमम डू नॉट अलाउ यू टू विड्रॉ क्रिप्टो आउट सो इजीली, तो विड्रॉवल पे काफी प्रॉब्लम है। तो अगर आप एक्सचेंज पे भरोसा नहीं करते हो, वाई वुड यू कीप योर मनी ऑन एक्सचेंज? तो एक्सचेंज को भी ये समझना चाहिए कि इफ आई एम डिपॉजिटिंग आईएनआर, इफ आई वांट टू बाय यूएसडीटी और बाय क्रिप्टो, डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस बट अलाउ मी टू विड्रॉ आल्सो, बट ऑफ कोर्स हैव सम लिमिट। लाइक एक नॉर्मल आदमी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख साल का इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो पे। अगर वो हर दिन का 10 लाख रुपया कर रहा है, इट मीन्स दैट अकाउंट इज काइंड ऑफ टेंटेड। अगर वो P2P ट्रेडर है, you ask them for all kinds of information, banking statement, what kind of
details they are doing, do they know their client. Like you do your KYC properly and but you allow users to use your exchange. अब certainly बहुत सारे exchange ऐसे है कि they have stopped people from withdrawing crypto. तो अगर आप ये करोगे तो obviously people are going to go to the P2P market, and the more people are there in the P2P market, the more it is easy for people to scam these people. तो ये हो गया अभी सिनारियो. तो इसका सोल्यूशन, लाइक देयर इज नो सोल्यूशन टू इट क्लियरली, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पैसा जिससे आ रहा है दैट पर्सन इज टेकिंग द मनी फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज और नॉट. एंड बाइनेंस में ऐसा कोई वे भी नहीं है कि आप वेरीफाई कर सको कि हाँ दिस यूजर इज Sam itself, and you know these are his details, and you can sign a contract where it says कि Sam मेरे को INR इसलिए दे रहा है because I'm selling him USDT. तो this type of things does matter. तो इसीलिए what we have been doing, we have been doing lot of P2Ps, OTCs, etc. in the market to understand कि like problem कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इसको solve कर सकते हैं. तो कोई भी चीज का परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं होता है. सो व्हाट वी थॉट ऑफ इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड नॉन कस्टोडियल स्वैप. सेंट्रलाइज्ड क्यों? बिकॉज आई हैव टू नो कि आपके पास से मेरे पास पैसा मतलब किस बैंक से आएगा, आप कौन हो, आपका ये अकाउंट टाइप क्या है, इज इट सेविंग्स, इज इट करंट अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ऑल द डिटेल्स, एंड यू ऑल्सो हैव टू नो कि मैं आपको जो INR भेज रहा हूँ, फ्रॉम विच अकाउंट आई एम सेंडिंग दिस INR. So that's why it has to be centralized. Non-custodial क्यों? क्योंकि I am allowing you to get this crypto and withdraw to wherever you want to withdraw. Because at the end of the day, I am not liable for your crypto. You get the crypto and you can trade, you can withdraw, you can do P2P, whatever you want to do. I will do with you one-on-one, and I will do your KYC well. And I am only doing for you a swap between INR to crypto or crypto to INR. And I am reporting everything to the Indian government. Because the government also wants to know कि कौन सा लोग P2P कर रहे हैं, कौन सा लोग स्वैप कर रहे हैं, लोग INR से क्रिप्टो कैसे कर रहे हैं या क्रिप्टो से INR क्यों कर रहे हैं. So that's why we have also registered with the FIU under the PMLA Act. तो ये सोल्यूशन. अब बहुत सारे आपने अभी सुना होगा कि decentralized P2P swaps. अब decentralized P2P swaps is not going to work in the long time, according to me. क्यों? Because the core problem is still there. In decentralized P2P swaps, you don't know where you're getting the INR from. Now people will talk about कि हम लोग AI लगा देंगे, हम लोग ML लगा देंगे. We will know exactly what kind of people behavior is. अब for example, आज Sam, Shovik, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, and we all do transactions via wallet. We don't know each other. So I trust Sam's wallet, I trust Shovik's wallet, Shovik trusts Sam's wallet, Shovik trusts my wallet, and you trust Shovik and my wallet. Correct? Up we are doing transaction, let's say 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, and then suddenly Sam decides कि now I want to sell my account or sell my wallet to somebody, and that somebody uses your wallet and buys or sells crypto with us, so we get the INR from his account. अब लोग बोलते हैं ना कि why would you do that? Because decentralized ID use करके you can do that, and everybody can connect a different kind of wallet every time they do a transaction. और समझ लो कि अगर बोलता है कि हाँ 100 ट्रांजैक्शन के बाद आपका लिमिट 100,000 हो जाएगा या 1 मिलियन हो जाएगा, तो पीपल आर जस्ट गोइंग टू डू दैट. वो जाके 100 ट्रांजैक्शंस करेंगे और वॉलेट को सेल करेंगे. So now when you are talking about reputational score, reputational risk, AI, machine learning, everything fails because you don't know who is using the wallet behind you and at what time it can go wrong. अगर centralized space में ये होता, so I would have known कि Sam ने अगर ये किया है, Sam will not be able to open another account in our swap because he can only open one account. So here he has a reputational risk as well as लॉ से भी रिस्क है उसका. अगर वो कुछ स्कैम करता है, I have all his documents, I'm going to report him to the government. So all the P2P platforms जो भी decentralized space में P2P platform build कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि we are a decentralized P2P platform, this is the rate, buy from us, sell from us. Again,
you are just allowing scammers to scam more people. Or sooner or later, the government is going to go after you, and they are going to tell you, show me all the IP addresses, show me all the details of the wallets, and if you don't have it, you are probably going to face the switching music. Basically, अगर Binance का CEO face कर सकता है, तो you are nobody. And Binance was actually doing KYC and KYB for the last 2-3 years. They didn't do it in the beginning, but they are doing it for the 2-3 years. But he went to this situation because Binance ने पहले 2-3 साल तक ये नहीं किया था. I don't blame him because at the end of the day there was no law around it. So जब law आया या फिर जब regulations आना start हुआ, he started doing it. But he faced this problem because in the beginning he did not do it. And he is going to probably pay a fine and probably serve some time, or may not serve some time, but he is going to get into a plea deal. So why do you think boss कि आप P2P swap लाके ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि लोगों को swap करना easy हो जाए? At the end of the day, you are still allowing the same problem जो Binance में है, but on a bigger scale. जो भी आपके swap में liquidity provide कर रहा है, that person is at risk. So this is why, this is one of the main reasons I think decentralized P2P swaps are not going to work. I'm not talking about decentralized exchanges. I'm not talking about liquidity pools. I'm just talking about decentralized swaps where you swap crypto to INR or fiat to crypto swap. That is my point. So Sam, what do you think like according to the logic that I gave you, do you think decentralized P2P swaps are the future for fiat to crypto and vice versa, or do you think this logic fits and maybe sooner or later they will face the music? So I also talk with a lot of people who do P2P and on and off ramp through various ways, like through regulated, unregulated, and all these stuffs. So mostly whatever I have seen, मैंने जो देखा है वो है कि there are a lot of people who are doing it, for a legal thing, like they want to do a payment, they want to buy crypto, sell crypto, and do some stuff, but they don't want to do a KYC. That's where I face, like, whenever I tell them that, hey, just do a KYC so that आप भी safe रहो and जिससे आप ले रहे हो, you also know that person. They are like, I don't care, because now what happens is whoever is doing it, maybe they are doing it for the first second time, and before that उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है Binance पे या कोई भी और अलग प्लेटफॉर्म्स पे. So उनको लगता है कि यार मैं तो सही जा रहा हूँ, so गलत क्या है if I am not doing KYC and it's decentralized. So the whole meaning of crypto is decentralized. So why I need a centralized provider to put my KYC and give them all the details, and government कभी भी आ सकती है. So उनको वो रिस्क नहीं दिखता इनिशियली कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, मेरा पूरा पैसा जा सकता है. And after that happens, like I have some people जिनका पूरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हुआ एक टाइम पे. After that they come up to me and they're like, bro, just tell me how to unfreeze it. There is no way. मैंने तुमको बताया था जब KYC करना है कर लो. So that time you were like, no, मेरे को तो मतलब anonymous रहना है, like I'm the person जो मैं anonymously सब चीज कर सकता हूँ. I don't want to give my financial records to any government. I don't want to keep any track of it. But ultimately you are keeping track of it only. और ये वे में आप जाके और गलत कर दे रहे हो. So मुझे तो वही लगता है कि मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, I just let them fail. So I've learned from somebody that first let them fail and then tell them how to do it. So एक्चुअली मैं that's यहाँ पे why एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. बिना गुरु दक्षिणा के कोई कुछ नहीं सीखता है. मेरे हिसाब से गुरु दक्षिणा देना जैसे सैम चाहिए. बता रहे हैं ना, जैसे सैम बता रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे सोचेंगे. अभी हम लोग इंडियन है कि हम लोग का ना दिमाग कुछ अलग ही दौड़ता है, ठीक है. अभी बहुत सारे यूजर्स ऐसा सोचेंगे कि एक काम करते हैं, P2P जिस अकाउंट में कर रहे हैं वहां पे INR रिसीव कर लेते हैं या फिर INR का डील करते हैं, और एक दूसरा मेरा ही अकाउंट में वो I think Shobik vanished. Anyways, he has some internet issues. तो मैं इसको बोलता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं. तो समझ लो कि आप P2P कर रहे हो, तो आप कोई बैंक अकाउंट को पर्टिकुलरली यूज करते हो फॉर P2P. तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि मैं अगर उस बैंक अकाउंट को सिर्फ यूज करता हूँ और मैं दूसरा कोई बैंक अकाउंट नहीं यूज करूंगा, so I will not get into trouble.
और इफ आई जस्ट यूज दिस बैंक अकाउंट, मैं उस पर पैसा लिया, फिर पैसा को किसी और के मतलब किसी और मेरे ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अगर गवर्नमेंट आएगा तो गवर्नमेंट आके सिर्फ मेरा ये वाला अकाउंट को ब्लॉक करेगा। बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। रियलिटी में गवर्नमेंट पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है कि कहाँ से स्कैम हुआ एंड उसके बाद किस किस के वॉलेट से वो पैसा गया है, एंड एवरी account will be blocked. So Sovik is back after his magic Sorry, vanishing eye. yeah, there's some issue with the internet connection. Actually, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे सोचते हैं कि चलो मेरा ही दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर अगर ब्लॉक होगा तो मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है वो ब्लॉक होगा, जो कि प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है या फिर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। बट ऐसा नहीं है। जब ब्लॉक होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ब्लॉक होता है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो जो अकाउंट के थ्रू गया है, मतलब ट्रैवल किया है, मान लो कि मल्टीपल लेयर्स के थ्रू गया है, ठीक है, मल्टीपल पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर हर एक किसी का अकाउंट में वो पर्टिकुलर अमाउंट ब्लॉक होगा। तो आप अगर ये सोचते हो कि मान लो कि 100 रुपए है आपका प्राइमरी अकाउंट में और सेकेंडरी अकाउंट में आपने वही 100 रुपए ट्रांसफर कर दिया और कोई एक टाइम के बाद वो 100 रुपए जाके ब्लॉक हुआ, तो आपका दोनों ही अकाउंट में 100 रुपए करके ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर ये रिस्क जो है ये और डबल हो जाता है आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपका मतलब इस तरह से डील करने से आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे ये जो आपने बताया ना, उससे मेरे को एक स्टोरी याद आया। लोग कोई एक आदमी था जिन्होंने P2P करा था फ्रॉम एन अननोन सोर्स विदाउट KYC। आफ्टर दैट ही मेड सम पेमेंट, जैसे दूध वाले को पेमेंट होता है, न्यूज़पेपर एंड ऑल। सो व्हेन द अकाउंट फ्रीजिंग स्टार्ट्स, उसका दूध वाले तक का पेमेंट मतलब लोग ब्लॉक हो गया था। एंड दूध वाला केम टू हिज होम एंड सेइंग, सर आप क्या किए हो, आपका जो ट्रांसफर हुआ है मेरा पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। सो ही वाज लाइक, मेरे को इतना खराब लग रहा था कि मतलब मेरे वजह से दूध वाला आके मेरे को बोल रहा है कि ब्लॉक हो गया मेरा अकाउंट। सो दैट इज इट गाइस। लाइक आप अगर कर रहे हो तो बहुत बार होता है कि आपको पता नहीं होता है कि यू नो व्हाट इज द राइट वे। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि पता होने के बाद भी यू फील लाइक ओके, यू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। बट जब हो जाता है उसके बाद आप फिर रोते हो कि नो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू विथड्रॉ, मेरा पैसा फंस गया एंड पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एंड आई थिंक ये अलग अलग जगह से होता है। लाइक इनिशियली व्हेन दिस फाइनेंस थिंग्स केम अप, वो पूरा सूरत गुजरात से हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद आई हर्ड दैट वो साउथ से होने लगा था। फिर अभी कुछ दिन पहले इट वाज मोड ऑफ हिमाचल प्रदेश के अराउंड से ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे। सो आई थिंक स्कैमर्स भी एक जगह से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ बीइंग कॉट। सो अलग अलग जगह पे यू नो ऐसे सेंटर्स लगा के रखे या ऐसे ऐसे लोगों से कर रहे हैं, ताकि यू नो इट्स नॉट दैट एक ही जियोग्राफिकल लोकेशंस पे उनको पकड़ा जा सके। सो आप अगर यू नो इसमें नहीं फंसना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऑलवेज ट्राई टू डू इट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड स्पेस जहाँ पे आपको पता हो यू आर डीलिंग विद। और ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है अगर आप सेंट्रलाइज, मतलब मैक्सिमम मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता ही नहीं अगर सेंट्रलाइज स्पेस में ऐसे एक्सचेंजेस होते विच वुड अलाउ पीपल टू इजीली बाय सेल क्रिप्टो, टेक केयर ऑफ द TDS, बट अलाउ देम टू विथड्रॉ द USDT और अलाउ देम टू विथड्रॉ द बिटकॉइन और अलाउ देम टू विथड्रॉ द इथेरियम। तो इससे क्या होगा कि एक्सचेंज विल ओनली एक्ट एज एन एक्सचेंज। अभी क्या होता है क्रिप्टो स्पेस में, एक्सचेंज एज एक्ट एज द एक्सचेंज, एक्सचेंज एज एक्ट द ऑन एंड ऑफ रैम्प, exchange as act the custodians, तो सब कुछ वो करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव 100% ट्रांसपेरेंसी कि उसके पास कितना INR है, उसके पास कितना क्रिप्टो है एंड उसका लायबिलिटी क्या है। आप बहुत सारे एक्सचेंजेस को, अभी कुछ कुछ इंडियन एक्सचेंजेस भी है, आप देख सकते हो कि दे डिस्कस दिस इज द अमाउंट ऑफ एसेट वी हैव, दिस इज द अमाउंट ऑफ INR वी हैव, बट वो अपना लायबिलिटी कहीं नहीं बोलते हैं। Like, dude, if you know balance sheet, if you know how you know trial balances work, etc., you have to tell कि आपका क्या बैलेंस है। अगर आप यूजर से 100 रुपए लेते हो एंड द यूजर इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू क्रिप्टो, अगर वो डॉज कॉइन खरीदता है, सो यू शुड हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ डॉज कॉइन, राइट? दैट 100 कैन गो टू इवन 1 बिकॉज इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज द यूजर्स प्रॉब्लम। पर अगर वो 1 के जगह आपके पास 0.01 है या कुछ भी नहीं है, आप बस दिखा रहे हो कि दिस इज द अमाउंट वी शुड हैव, सो यू आर मेकिंग थिंग्स अप। और इसीलिए काफी सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैज गॉन डाउन द ड्रेन्स, चाहे वो सेल्सियस हुआ, चाहे वॉल्ट हुआ, चाहे ब्लॉकिफाई हुआ, FTX हुआ, all these centralized exchanges, all these centralized platforms has gone down because
उन्होंने यूजर फंड को यूज करके या तो ट्रेड किया है या यूजर फंड को यूज करके डीफाई में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का सोचा है. Some platforms told people that they are doing it and they advertised 12% APY, 15% APY, all these things. But others did not do it. कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ and I'm not going to use this money to trade. So that is generally what people think. But most of the time it does not happen like that. Even Binance has teams which do proprietary trading against the users. अगर वो स्टॉक स्पेस में होता तो ऐसा कभी नहीं कर पाता. तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स, इसीलिए लोग अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहते. एंड विथ मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स एंड रेगुलेशंस एंड इश्यूज कमिंग इन, ये बढ़ता जाएगा. तो यहाँ का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि there is a centralized platform which you can use for on and off ramp, but you have 100% custody of your crypto. That can be another centralized custodian, that can be a non-custodial wallet, that can be a platform which connects you with both centralized and non-custodial wallets and swaps and staking platforms, etc., etc. So at the end of the day, you are just paying us for on and off ramps or maybe for providing the platform, and you are taking care of all your crypto needs for whatever you want to do. So that is what we wanted to build, and that I think that's the first thing which comes to my mind कि अगर आपके पास crypto है, if you had a chance, do you want to keep everything in a non-custodial manner? Probably not, क्योंकि आपको trade भी करना होता है. You want to keep some money so that if needed suddenly you can withdraw. But do you want to keep 100% of your money in a exchange or in a custody situation? Probably not also. तो इसका ट्रेड ऑफ यही हो सकता है कि देयर शुड बी सम सेंट्रलाइज्ड नॉन कस्टोडियल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ट्रेड, इन्वेस्ट, स्टेक एटसेट्रा, सो दैट इवन इफ द सेंट्रलाइज्ड कंपनी गोज बस्ट, आपको आपका ये मतलब एक्सेस रहे क्रिप्टो के पास. That's what I think is the ideal solution. And yeah, I think I'm willing to listen to Shovik and Sam more on this, but I think this is where I would like to give them a space so that वो अपना thoughts को बोल पाए, and if there is some questions, willing to take them as well. So मेरा कुछ Actually, question जो Sam, please. तो मेरे को एक ही क्वेश्चन हर बार मिलता है, दैट इज लाइक कि केवाईसी में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं क्यों केवाईसी करूं, एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई इट्स नीडेड एंड व्हाई इट्स द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म्स है जो नहीं मांग रहे, सो दे आर रिलेटिवली चीपर. एंड बहुत बार ऐसे भी होता है कि पीपल आर वेरी प्राइस सेंसिटिव इन दिस P2P मार्केट, कि दे आर लाइक कि मैं 86 में कहीं पे मिल रहा है, यू आर चार्जिंग 88. सो उनको वो नहीं समझ में आता है कि 86 वाला हो सकता है पूरा फंड्स लेके गायब हो जाए एंड दे गेट नथिंग. बट वही है कि लोगों को है कि मैं सस्ते में खरीद लूं एंड देन अगेन आई बिकम अ मीडिएटर, एंड मैं आगे जाके उसको 89-90 में बेचूं एंड आई गेट अ 3-4 रुपीस कमीशन इन बिटवीन. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जब P2P स्टार्ट हुआ, सो दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, एंड फॉर दिस ओनली उनको लगता है कि अगर मैं केवाईसी कर रहा हूं तो फिर गवर्नमेंट के पास पता चल रहा है, दे डोंट वांट टू पे द TDS 1% की मैं TDS दे दूंगा तो मेरा फंड्स लॉक हो रहे, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो कीपिंग अ ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी आई एम मूविंग. सो आपको उनके लिए क्या कहना है कि लाइक व्हाई दे शुड कम ऑन दिस सेंट्रलाइज्ड स्वैप एंड यूज इट रादर देन टेकिंग द हिट ऑफ जो स्कैमर्स 86 रुपीस या नॉन केवाईसी में जो कर रहे हैं उनके पास ना जाकर. So I will like to break it into few questions. Shavik, do you want to add something here? No. Actually, यहाँ पे एक चीज है, एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ ही. ठीक है, बहुत सारा जगह पे आप लोग को ये एक्चुअली एक सिनेरियो है. जैसे शाम बता रहे थे ना कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे सोचते हैं कि केवाईसी मैं क्यों करूं, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, TDS लायबिलिटी आ जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, ये वो. आप लोग अगर ये सोचते हो कि केवाईसी करने से ही ऐसा होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो. आपके अकाउंट में जैसे ही कोई पैसा आ रहा है तो फिर आपका पैन के थ्रू सारा चीज ट्रैक होता है. तो कोई भी पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है या उससे जा रहा है, आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपके पीछे पड़ता है तो यू आर लायबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस कि क्यों आया, कहाँ से आया
और किस पर्सन से आया, वो मनी क्या लीगल मनी है, लेजिट मनी है, आप जो इनकम कर रहे हो, तो ये सब चीज। दूसरा चीज है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स जो है अभी 30 मार खान भर रहे हैं उनके बहुत सारे, वो लोग वहां पे क्या करते हैं, यूजर्स को ऑफर देते हैं कैश डील, P2P कैश डील, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन कॉमन सिनारियो है। और बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं यूजर्स उसके मतलब ट्रैप में भी आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेट जो है वही सेम चीज, रेट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आप खुद सोचो कि किसी का ब्लैक मनी अगर कोई आपके थ्रू वाइट कर रहा है, तो फिर उसको जो रिस्क है ना, वो बेसिकली रिस्क आपके ऊपर वो ट्रांसफर करके वो भाग जा रहा है मार्केट से, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो बंदा आपसे दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो ठीक है। तो ये कैश जो सिनारियो है ना, डेफिनेटली, ये बिल्कुल ये अवॉइड करो, बिल्कुल नो, इट्स ए बिग रेड फ्लैग। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा सिनारियो आपने उठाया है। तो अ, मेरे को नहीं पता कि आपको कितना पता है, पर 2019 2020 से रफली 2018 2019 के एंड 2018 के एंड 2019 के बिगिनिंग से 2022 तक, अर्ली 2022 तक बहुत सारे ऐसे ओटीसी डेस्क स्कैम मतलब फेक क्रिएट किए गए हैं कि लाइक दे वांट टू डू बिग ट्रांजैक्शंस विद यू, एंड they want you to go to Italy, they want you to go to France, they want you to go to Spain or somewhere, and they want to meet you in person before doing the deal. So you do their KYC, you do everything, and then you see fine, let's go there. अब वहां पे जब जाते हो, like they take care of you physically, like take hold of you physically. तो किडनैप तो नहीं करते, बट like they threaten you, yeah, if you don't give me crypto, I'm going to kill you, I'm going to put you in somewhere nobody is going to find you, etc etc. तो आप उस प्रेशर में आके यू आर फोर्स टू डू समथिंग विच यू अदरवाइज वुड नॉट हैव डन। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो स्पेशली ओटीसी डील्स के लालच में आ जाते हैं, या फिर दे आर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स एंड दे थिंक कि उनसे इन्वेस्टमेंट मिलेगा एंड लेट्स गो एंड टॉक विद देम। So this is the same thing that is happening in the Indian crypto space as well, but on a smaller scale. कि वो आपको लालच दे रहे कि I want cash in Surat, I want cash in Delhi, I want cash in Hyderabad, blah blah blah, all these things, and they're giving you a better rate. कि I'm going to give you 95 or I'm going to give you 100, etc. And you sell me the USDT in face, and I will give you this INR. So maybe 9 out of 10 chances is that you're going to get into trouble, not before even the deal happens, even before the deal happens, not before after the deal happens, sorry, तो before the deal happens. तो आप गए, आपको किडनैप कर लिया गया, आपको थ्रेटन कर दिया गया, and there are so many things that's happening, and 1 out of 10 chances maybe डील हो गया, उसके बाद जाके आप प्रॉब्लम में पड़े। तो ये है सिनारियो। तो कमिंग टू व्हाई यू नीड टू डू केवाईसी, तो वी हैव बीन यूजिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एक्सट्रैक्स। तो मैं एक्सट्रैक्स में पहले काम करता था। सो एक्सट्रैक्स ने एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव टूल लाया है, दैट इज कॉल्ड बिटचेक, विच इज एन एस्क्रो सोल्यूशन। बट अनलाइक अदर एस्क्रो सोल्यूशन, हियर यू कैन डू अ escrowed bit check, which is basically contract bit check, where you can write कि मैं कृष्णेंदु चैटर्जी हूँ, I am going to sell USDT to Sam, and I say that my USDT is clean, and Sam says his INR is clean, and then I'm sending it to him. Sam sees my bank account, Sam sends me the INR, and I release the USDT to him. Of course, taxes you can take care of later on, but what you did right now is a contract of selling USDT to Sam. अगर बाद में आपका कभी अकाउंट फ्रीज होता है, या आपके पास कुछ पुलिस आते हैं या कोई आता है टू चेक कि व्हाई हैव यू गॉट दिस INR, यू कैन टेल देम कि आई हैव सोल्ड दिस USDT and this is the INR I have received. So instead of getting all the money locked in your bank, you will have a way to talk or negotiate and state your case. But अगर आप कोई decentralized platform से करते हो, you don't know who is sending you the money, you don't know the source of the money, and you cannot prove कि you are not part of this crime. But यहाँ पे इस contract के कारण you can prove the part of the crime. तो हम लोग बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके ही ऑल द P2Ps करते हैं। तो दैट इज वेयर आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू कंपेयर टू ऑल द अदर प्लेटफॉर्म। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट डू इट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन अ सिंगल डे। So that's what got us thinking कि fine, I understand there's a BitCheck contract, I understand कि we can use it to eliminate fraud. तो इस कारण से we have done maybe thousands of BitChecks or thousands of P2P transactions, and till date we have not got into any massive trouble because we have gone through this BitCheck contract,
एंड द अदर पर्सन नोज कि इस बंदे के पास मेरा सब डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं कुछ लोचा करूंगा, कुछ प्रॉब्लम करूंगा, तो डेफिनेटली ये बंदा आगे फॉरवर्ड करेगा. एंड सिंस नाउ वी आर ऑलरेडी अ रिपोर्टिंग यूनिट अंडर द FIU, so we also have an obligation, right, to report any kind of money laundering or any kind of suspicious activity. So यहाँ से हम लोग सोचे कि like what can we do. So for this reason we are currently coming up with a own swap which is called A2Z crypto swap. So this is a centralized but non-custodial swap. Centralized क्यों? Because we will do the KYC, we will verify your PAN, we will verify your bank account, we will do some other verifications if you want to do bigger transactions, but we will allow you to withdraw this crypto out, unlike some other crypto exchanges. And we will be also reporting to the government ki, hey, this is the amount of transactions we have done, these are some of the suspicious transactions we think, and for normal people there is no trouble, you just buy or sell crypto to us, that's it. So why we want to do this in centralized manner? Again, मैं जानना चाहता हूँ कि आप INR जो मेरे को भेज रहे हो, you are sending from your bank account or not, and the INR I am sending to you is also from my bank account or not, right? So that is the thing. और आप अगर आपने इसके ऊपर बाद में जाके बोला जो रेट जो होता है वो काफी मैटर करता है. So let's say you get a rate of 85 in some exchange and 90 in some exchange and 100 in some exchange, or 85 is also a centralized exchange, 90 is also a centralized exchange, and 100 is a decentralized exchange or an exchange where it's not it's an exchange where it's not like, let's say, centralized but decentralized or foreign exchange etc. तो अगर आप 100 के थ्रू जाते हो, ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग कि मेरे को ज्यादा रेट मिल गया, मेरे को ज्यादा पैसा मिल गया, पर आपने जो 100 अपने बैंक में डाला इसके कारण आपका पूरा 100 का 100 ब्लॉक हो जाएगा. सो दैट्स अ रिस्क यू आर हैविंग फ्रॉम इमीडिएटली द मोमेंट आपके पास जब पैसे आता है तब. अगर आप कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू करते हो, अब हर एक्सचेंज में रेट डिफरेंट होता है. क्यों? अगर कोई एक्सचेंज में आपको विड्रॉ ही नहीं करने दिया जाए, दे कैन पुट एनी रेट, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कैन मैनिपुलेट द प्राइस. अगर कोई एक्सचेंज करने देगा आपको, सो हिज रेट विल बी मोर क्लोजर टू द नेचुरल USDT रेट ऑन द मार्केट. तो दैट इज व्हाई द रेट ऑलवेज विल डिफर फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस. कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, बट is always safe to use a centralized exchange for transactions, and hopefully then withdraw this crypto to a non-custodial wallet, because at the end of the day exchange के पास tax filing का कोई opportunity नहीं है. If you are making profit you have to pay the taxes, that's it, simple as that. exchange आपका TDS forward करता है, that's all. and if you are a business, आपके transactions के against में they are also paying GST, so you are getting a GST input as well. So now you have to think कि मेरे लिए वो 100 रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर डूइंग इवन 90 you are losing only 10 rupees, but that 10 rupees loss or that small loss whatever it is actually ensuring कि you never get into trouble. Do you think this trouble is worth it? If you think yes, this trouble is worth it, then definitely go use some decentralized exchanges and pay your guru dakshina, learn from this, and then come back. And if you think it's not worth it, then definitely use some OTC desk, use some centralized exchanges, and finally get into crypto where you are able to hold crypto in non-custodial wallets. Pravik, your take on this? नथिंग. अभी हमारे व्यूअर्स का कुछ अगर सवाल वगैरह होगा तो फिर वो लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. हम लोग को डायरेक्टली मैसेज के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है हम लोग का, अभी फेसबुक जो चैनल है, लिंक्डइन में जो हम लोग का ऑफिशियल पेज है वहाँ पे जाके वो लोग पोस्ट कर सकते हैं. तो हम लोग उसको जरूर रीच आउट करेंगे और पॉसिबल जो सोल्यूशन है वो देंगे, ताकि वो लोग P2P स्कैम से दूर रहें, अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें. So before we close, इसका एक सिंपल सा फंडा है, बिफोर यू एक्चुअली डू सम ट्रांजैक्शन विद समबडी, इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, आस्क देम सम सिंपल क्वेश्चंस, लाइक आपका जो फंड है ये
clean hai ki nahi, all these things before you actually get into a transaction. So that in case you are not using a verified platform or you're not using, let's say, XRX ka contract bit check, you at least have some sort of proof कि आपने उनसे पूछा था. So this might actually help you if your money gets blocked. You can say that I tried to do this, but it did not work out. There are also many other things, but it depends कि like आप किस तरीके से कर रहे हो. So it's always good to go through a centralized party than a decentralized party because इसमें risk आपका काफी कम होता है. Yes, of course you have to pay taxes. You have to pay taxes anyways because आपके जब अकाउंट में पैसा आ रहा है, government is going to ask you why did you get it. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. Second, you have to have that mental peace key that this transaction that I did is not going to block my account. Right. So before we close, Krish, do you have upper limit in withdrawal of the crypto through A2Z swap? Suppose if somebody is converting INR to crypto. So basically, हम लोगों ने क्या किया है? We have partnered with XRX as the custodian and as the SaaS platform provider for doing this swap. So we are a centralized company based in India who is going to take care of the INR to crypto and crypto to INR. But once you get the crypto in the XRX wallet, you can either withdraw it out to wherever you want. You can trade there. You can withdraw to other exchanges, non-custodial wallets, etc. So we are using XRX as our SaaS provider and as our custodian for the crypto side. Why XRX? Because XRX is already having multiple licenses. Their practices are much more open, transparent compared to some other exchanges I have worked. And definitely, मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया है. So I have a good faith with them that whatever they have done over the years, they are going to maintain the same standards. So that's why we are starting with there. But the ultimate aim of A2Z Crypto is to have a centralized yet non-custodial investment platform. And centralized non-custodial swap is just the first step. We are planning to have multiple other dexes or custodians, etc., connect with us so that we can offer our end users a better service. And this is just for the retail clients. For the HNIs or bigger ticket sizes, we can definitely do OTCs as well, where we will do everything as compliant and as strict as possible so that nobody gets into trouble. So that's what we are going to offer to our users in the next couple of days. So coming back to the question, like, is there any upper limit that we have set right now, or is it like flexible? So definitely there should be some upper limit. जैसे हम लोगों ने कहा है कि there's always a limit. I'm not going to disclose any limit here for obvious reasons. But if you want to do higher limit, तो कोई भी crypto size अगर आप open market में buy or sell कर रहे हो, so that will move the market. So no amount of, let's say, X amount can be used for buying or selling crypto on the open market, because then that will bring down the prices by a lot, right? So for this reason, any big ticket sizes, we will definitely use OTC method. But for smaller ticket sizes, you can use the swap. That's it. Got it. So thank you guys for joining in for this lovely P2P discussion. And if you have any questions in between, do reach out to us on our social media pages and do comment here so that we can take it up in our next sessions. And we do keep up with weekly live session to give you updates and notifications about what's happening in the crypto space, and also take your questions there. So do follow our channel, subscribe, and ask questions. And see you back again on Thursday with our live crypto discussion. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.